के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो प्ले स्टेशन ने जो खुद का निकाला है ना साउंड का, वो सबसे बेस्ट है। उससे अच्छा तुम्हारे को कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम्हारे को दुख तकलीफ आएगी आएगी। हाँ, नहीं नहीं, उसके पास और भी एक आता है सैम, 8,000 रुपये का कुछ आता है एक। तो उसके पास लास्ट टाइम भी जो आए थे ना, वो 4,000 रुपये में कुछ आए थे। तो हाँ, तो वही क्या बोलते हो, बोला है कि बोले भाई मैंने बात किया हूँ तुम्हारे लिए, अगर वो आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे को बताता हूँ। ठीक है, बता मेरे को जैसा भी है। अभी उससे अच्छे हो गए वो, टेंशन नहीं रह गया अभी उससे। उसको मालूम है ना, इतना धंधा दे रहे हो उसको साले को बैक टू बैक। हेलो हेलो हेलो। बताएगा ना वो, टेंशन मत ले, पल्सी है, बताएगा वो। टेंशन ना ले, आने तो दे उसके पास पहले। नहीं, वो टेस्ट करने नहीं देगा भाई वो अपने को। तो देखेंगे ना, वो बात करेंगे ना, लेने के पहले अपन ऐसी डायरेक्टली नहीं ले लेंगे ना, बात करेंगे ना अपन उससे भाई, टेंशन क्यों लेता है। सोनी का, सोनी का, हाँ सोनी है वो। एयरपोर्ट तो बा क्या बोलते हैं आज के टाइम पे, आईफोन के, आईफोन वाले भी में एक्सपेंसिव है भाई, 25-30 हज़ार रुपए के। क्या पता, पता नहीं भाई, नो आइडिया। मैं कभी वो गया ही नहीं उस, हाँ मैं कभी गया नहीं उस लाइन पे, तो मेरे को पता नहीं इतने महंगे क्यों हो चुकी है साले। Hey Sam, this is Tarman. The disruptor device we need you to disable is located in this area. You should have no trouble whatsoever destroying it using MP bullets or MP shells. Alternatively, consider getting close enough to access उसके the पास ना device directly. एक वो पड़े, You can use your रेजर ring के भी terminal to पड़े have उसके APAS पास, hack into it, लेकिन वो allowing हेडफोन you है। to disable it without resorting to brute force. तो वो Be advised though, Sam, that नहीं some नहीं, of the वायर्ड brigands वाले you'll encounter on site will विथ be माइक wearing एंड armor एवरीथिंग, protecting both their heads वो and bodies. बोल रहा है And that every 3,500 one of रुपये these उसके, armored units will be लेकिन वो wielding a सील्ड पैक rod. है। No doubt their aim is to fortify themselves against ranged attacks, allowing them to move in and लेकिन फिर वो engage तेरे को you at हेडफोन close जमेंगे quarters. नहीं। In light of this development, we've gone ahead and added armored enemies to our VR weapons and combat मैं तो training हेडफोन ही programs. यूज करता हूँ भाई, This way you can experiment with various methods तो and आई find a एंजॉय means of यूजिंग dealing with हेडफोन्स। them that's suited to your personal हाँ, मैं मेरे strengths. JBL वाले That's all हेडफोन्स the ही यूज information करता I हूँ। have for now. Review your potential routes and finalize your equipment loadout before heading हाँ, out. We're counting on अरे you, भाई Sam. मेमोरी फोम वो सब ना तेरे को कान पे पता ही नहीं चलता है भाई, तेरे को वो है ही नहीं सीन के भाई हाँ कान पे क्या बोलते हैं लग रहे ना, ये हो रहा है ना वो हो रहा है, कान दुख रहा है, कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। हाँ माइक बटा ही दिया ना, मैं तो माइक तोड़ के फेंक दिया उसका मैंने JBL जो लिया था वो टाइम पे आई थिंक 6,000 का कुछ लिया था। हाँ भाई मेरे लिए तो वर्थ इट हो गया वो, क्योंकि मैंने बहुत घस लिया उसको। हाँ माइक मेरे PC के साथ क्या बोलते नहीं सपोर्ट हो रहा था वो,
तो वो हाँ पीसी के साथ क्या बोलते हैं उसका कुछ तो सीन हो रहा था, तो वो इको हो रही थी मेरी वॉइस ना, उसकी वजह से वो सीन हो रहा था। बट हाँ हेडफोन क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड। बट इससे अच्छा अब मैं तेरे को बोलूँगा, अगर इतने स्पेंड करना है ना तेरे को, तो बेटर देन दैट गो फॉर वायरलेस हेडफोन्स। अगर 6,000 रुपये स्पेंड करना है तो क्या बोलते, रेजर का बाराकूडा एक्स करके एक है, वो मिल रहा है। क्या? ब्लूटूथ। और पीएस के साथ के लिए उसमें वो भी है, क्या बोलते हैं अपना, वो तेरा सब चीज़ से कनेक्ट होएगा, पीसी, फोन, पीएस। तेरे पीएस के लिए उसमें है ट्रांसमीटर भी है उसमें। हाँ हाँ उसका है उसमें, वो क्या बोलते ब्लूटूथ ट्रांसमीटर जो है ना, वो है उसमें। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। हाँ 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 वही वही ब्लूटूथ का क्या बोलते हैं रिसीवर वाला, हाँ वही रिसीवर वाला जो अपन ट्राई करने वाले थे ना दूसरे हेडफोन्स के साथ। हाँ हाँ हो सकता है, हो सकता है। हाँ हाँ अच्छा हाँ ऑफकोर्स ये होगी। हो सकता है। हाँ और मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम पब्लिक ना, मैक्सिमम मेरे हिसाब से पब्लिक तो ना बा क्या बोलते अपना FPS गेम्स खेलने के लिए माइक यूज़ करती है, ठीक है। अपने जैसा पब्लिक खेलती भी नहीं है इतना ये सब गेम, जो मेरे को लगता है, तो उन लोग को इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। फीफा भी मेरे हिसाब से माइक पे कहाँ खेलते होंगे, माइक पे कहाँ खेलते होंगे लोग ऑनलाइन, आई डाउट। हाँ कॉल ऑफ ड्यूटी वो सब है तो हाँ नहीं, और कॉल ऑफ ड्यूटी और वो सब जो खेलते होंगे ना, मेरे हिसाब से जो खेलते होंगे कॉल ऑफ ड्यूटी और वो सब, तो दे वुड भी क्या बोलते हैं उन लोग पूरा पूरा टाइम ही खेलते होंगे बा, तो उन लोग ले लेते होंगे अच्छे वाले हेडफोन। हाँ अच्छे वाले उन लोग ले लेते होंगे, उन लोग को फ़र्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि उन लोग को मालूम है कि भाई यहाँ यही गेम खेलना है। और इंडिया में मोस्टली पब्लिक वुड बी प्लेइंग मेरे हिसाब से प्ले स्टेशन पे स्टोरी गेम्स रैदर देन क्या बोलते हैं अपना फोर्टनाइट और वो सब। हाँ सोचेगा भी नहीं, इतना नहीं सोचेगा। हाँ 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 Sam, are you planning on entering enemy territory while carrying all that? With that much cargo on your back, they'll spot you in no time. Why not stash your backpack and any excess equipment somewhere safe and take only what you need for now? हाँ वो तो है।
पीसी पे बहुत कंप्रेशन बेटर है भाई। यस 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 यस, पीसी पे क्या बोलते, देर आर लॉट ऑफ क्या बोलते थिंग्स यू कैन यूज पीसी पे आज के टाइम पे। क्या बोलते तेरा जो प्रोसेसर है ना, जैसे क्या बोलते AMD का प्रोसेसर है मेरा, और क्या बोलते अपना NVIDIA के जो प्रोसेसर्स आ रहे और मदरबोर्ड आ रहे, तो उसका अगर तू यूज़ करता है तो उन लोग के खुद के जो ड्राइवर्स देते हैं ना उन लोग, उसमें ही आज के टाइम पे क्या बोलते सब कुछ दे दिए, वॉइस सप्रेशन, रिकॉर्डिंग, स्ट्रीमिंग, सब कुछ दे दिए भाई। खुद के सॉफ्टवेयर इतने कड़क कर दिए उन लोग ने जिसकी कोई हद नहीं। NVIDIA तो क्रेजी हो गए उसके सॉफ्टवेयर, NVIDIA के तो वन ऑफ द टॉप नॉच सॉफ्टवेयर NVIDIA का। पीपल बाय NVIDIA के क्या बोलते अपना प्रोसेसर, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं उसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए। यस यस यस, ऑफ कोर्स अच्छा ही हो जाता है। हाँ A word of warning, Sam. That sniper rifle doesn't appear to be equipped with a suppressor, meaning it will make considerable noise when fired. Take care not to attract the enemy's attention. हाँ 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 तो वो तो क्या बोलते तू थोड़ा टाइम के लिए तू स्टार्ट में मेरे हिसाब से तेरे को डिस्कम्फर्ट होगा यूज़ करने के लिए, बट आफ्टर सम टाइम तो बहुत क्रेजी है भाई। हाँ मालूम ही नहीं पड़ता है तेरे को कि तू लगा के भी रखा है। मेरे को स्टार्ट में फील हुआ डिस्कम्फर्ट कि हाँ भाई क्या इतना बड़ा पहना हुआ हूँ मैं, बट लेटर ऑन इट वाज फाइन फॉर मी। बाय द वे ये गेम का पेस बहुत क्रेजी है 2 का। हाँ आई आई थिंक सो। हाँ
हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ वो कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं अभी तो कैसा है, मैं स्टार्ट से आई एम ट्राइंग कि भाई क्या बोलते हैं सब करते चले जाओ। हाँ हाँ बहुत सारे किया मैं भाई, मैं ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं अभी तक तू बोलेगा ना सही बात, तो मैं स्टार्टिंग वाले पार्ट में ही हो गेम के। हाँ खाली ट्रेनिंग कंप्लीट किया हूँ ऐसा है। हाँ हाँ फ्लैट करूँगा मैं, कंफर्म करूँगा, देयर इज नो डाउट इन दैट। नहीं करूँगा सिखाता हूँ। Godofwar Moiz sexy. Sam, you disabled the target. And don't forget to collect your things before moving on. Keep it up. मैंने वालों एक फालतू गिरी कर नहीं, अफकोर्स नहीं कर रहा मैं, तुम लोग पागल हो जाओगे मैं कर दिया कभी तो। अरे भाई मैं क्या बोलते, नहीं यार मैं क्या बोलते अपना ट्रॉफीज देख रहा था, एक दो ट्रॉफी जो नहीं देखना चाहिए थी वो देख लिया। हाँ अरे नहीं मैं क्या बोलते वो साइड मिशन फोकस्ड कर रहा था ना,
तो मैं वो उसके लिए देख रहा था। क्या? साइड मिशन का कुछ स्पॉइल हो गया, स्टोरी का कुछ नहीं स्पॉइल हुआ, साइड मिशन का स्पॉइल हो गया। आ Okay. लगता है यार। Right. Got a little cargo under the shelf in the back.
मतलब हाँ हाँ हाँ, दूसरे प्लेयर का नहीं, हाँ दूसरे प्लेयर का नहीं कहा था। मार कसम। Okay. मैं तो खाली ट्रैवल कर रहा हूँ। चीजें बना रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। सीनरी देखना है तो कर सकता है ज्वाइन। तो स्ट्रीम शेयर करने की भी जरूरत नहीं, स्क्रीन पे आ जाए डायरेक्ट। Wait here, baby. I'll be back. क्या? Okay. तेरा खत्म हो गया सैम?
और कुछ कर देगा, देख तेरे को झटका। हाँ Just a bit further now. इसमें अभी तक जो जो चीज़ आई है सब बिल्ड का। लाइक्स मेरे अभी आई थिंक 14,000 कुछ है। Detected. Be advised that usage is restricted. कच पढ़ना चाहिए लेवल एकदम। Hold on. You're with Drawbridge, am I right? Hope the brigands weren't too much trouble. Though you look okay. Glad you can make it. Alright. Let's take a look at this cargo of yours. Look at the shine on this. Hot damn. Talk about one crazy surprise. I'd given up on this one. I'll definitely have more work for you if you want. I've been waiting a long time for this. Okay, use your Cupid to hook me up. Let's go.
Commander agreed. ओह क्या बड़ी लीड चीज़ है। This is really something. I'm part of the chiral network, which means everyone can finally listen to my songs. Then with the music player, you'll be able to set the mood for your adventures. And just like that, the world's gotten so much bigger. Yeah, looks like my weapon data has been shared with everyone too. So about the recording you brought me, it almost sounds like a whale song. But there's something off about it. I'll need more time to figure it out. Anyway, I'll send you updates via the SSS. That tar man's the one who recorded it. Said he heard it while he was out tar fishing. Have a listen. Call me crazy, but we might be dealing with something like a whale. Another interesting thing to note, creatures that hear the song make an effort to avoid the source. बाकी तू फ्लाइट कर रहा है Not much क्या? else I can say with confidence. However, give me some time to analyze it, and I might get you some answers. हाँ आतिफ को पूछ रहा हूँ। Yep, I can really immerse myself in my work here. Sadly, all the music I've made never gets heard by anyone else. Still, that's about to change. Because of that update I pushed you earlier, the new music player function, remember? In it, you'll find a sample of my work. When you've got the time, be it on the job or relaxing somewhere, why don't you take a listen? Yeah, I got it from a friend who knows all about weapons. Now, this is way back in the day, when I was traveling in search of new music. Well, he said I'd need to protect myself, taught me how to use it and everything. But I never did in the end. Just as well, I'm better with instruments, you know? Apparently this shines when you break it out at close range. Incorporates the latest tech as well, so it ought to pack one hell of a punch. In an ideal world, we wouldn't ever need stuff like this. But I bet it's a necessary evil for you. Do what you gotta. Gotta get going, huh? Well, hey, thank you for the help. You know, I've been wondering how those brigands got their hands on that disruptor thing. I'm just saying, they certainly don't have the know-how to build one. It's kind of worrying. Oh yeah, I had another favor I wanted to ask, if that's cool. I lost some cargo near and dear to my heart, even though I tried my best to keep it safe. I've tracked it to this dangerous place. Too dangerous for someone like me. The request's open to anyone willing to accept, but something tells me you'll deliver. Get it? Anyway, if this kind of works up your alley, then take a look at my suborder. Thank you so much, Sam. I have high hopes for his work, but I suppose we'll have to wait and see what comes of it. As for that strange device, it seems that its effect on the tar currents blocked all chiral communications. So I think it's only fair that we call it a chiral jammer. Anyway, while the currents in the area have settled down somewhat, we've received a number of troubling new reports. For one, a tar eruption was recorded in the direct vicinity of West Fort Knot. A group of figures clad in red and a large unidentified black mass were observed just prior to this eruption as well. Needless to say, the anomalous tar current activity near West Fort Knot may be related to these events, so we can't afford to ignore them and proceed with network expansion. We've got no choice but to investigate and address any cause that may be present on site. The corresponding main order has been added to this delivery terminal. I've got a feeling a difficult fight might be ahead of you, Sam. I strongly...
हाँ ये दो, फर्स्ट वाला दे दो। कैसे उसको एक्सेप्ट ला। कंफर्म। Advise you to prepare accordingly. हाँ नहीं अभी तो कंफर्म कर वाले। नहीं कंफर्म बस। रिपोर्ट करूँ ना? हाँ एक्स होल्ड दबाना। वहाँ कितना सामान गया ना? हाँ बच गया। तो मेरे को लगा शायद फुल हो गया भाई। कंफर्म कर और देख, लॉस कार्गो भी दे सकता है क्या? फटाक से पकड़ ले वापस टर्मिनल। दबा 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 टर्मिनल। हाँ और उस पे डाल दे कुछ। और क्या डालूं? ये शेयर लॉकर से छोटा मोटा कुछ उठा के क्लेम हल्का हल्का कुछ। हाँ डाल दे भाई। इधर का है? हैवी है क्या बहुत? मेरे को नंबर दिख रहा नहीं है। 4 किलो है। डाल दे उसको, ले ले। पर किधर का? क्राफ्ट्समैन थोड़ा दूर हो गया। दूर है। पर वक्त तेरा कोई सामान नहीं भेज रहा मैं मेरे स्पॉट तो माउंट छोटा मोटा इधर उधर कर देगा। ओजिम का दे दे। चल ओजिम और मेरा दे दे। किधर है? ओजिम का भी सामान था अभी लास्ट देखा तो। हाँ ओजिम दिखा मेरे का। नशे में तो नहीं नीचे बूट्स वूट्स कुछ उसका था। हाँ आ रही है तेरी आवाज। हाँ ये देख ओजिम का था वो। क्या ओजिम का था भाई? ये मेरा सामान है। ऊपर जा। नहीं ये देखे तो नीचे पीसीसी। और एक और। हाँ इसी पे लिखा हुआ है। हाँ वो तो तेरे लिए है। चल ठीक है उसको जाने दे। कोई खाली सुनता रहेगा तो तेरा काम भी नहीं होगा। हाँ अभी वो डिलीवरी मोड पे नहीं है, फॉलो मोड पे। पॉज दबा। हर चीज देखो मैप से मैनेज करना है उसके बॉट को। पॉज दबा। हाँ अभी तेरे सामने ही खड़ा है ना, तो डी पैड अप दबा ताकि वो लोकेशन में वो चूज करे। बड़ी बॉट देख कहाँ है, नहीं तो उसके ऊपर जरा मेरे को ब्लर आ रहा है, तो बड़ी बॉट पे हाँ ये डाल। बॉट तो आ ही नहीं रहा। डी पैड अप से आ रहा है क्या? मेरे को दिख जाता डी पैड अप से। आप डी पैड अप नहीं है? नहीं यहाँ से नहीं, पॉज से ही तेरे को चूज करना है उसका मोड। बड़ी बॉट कहीं दिख रहा नहीं है क्या? अंदर से ही करना पड़ेगा क्या? नहीं यहाँ से ही करना है। ले शायद थोड़ा बाहर जा,
लेकिन मेरे को तो यहाँ से भी देता है। मेरे को ब्लर इतना आ रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है तू क्या ले रहा है क्या नहीं। हाँ अभी देख, नजदीक आने दे एकदम तेरे। हाँ पॉज दबा। हाँ टी पैड अप डाउन कुछ कर। नहीं कुछ भी नहीं है भाई। तो जूम इन कर एकदम। बॉट का दिख रहा नहीं है देखो। अरे ये बॉट का तूने साइन बंद किया है शायद। फक ट्रायंगल पे पॉज दबा और ट्रायंगल दबा। ट्रायंगल है ना, कहाँ से तेरे आइकन के ऑप्शन कहाँ से आता है? हाँ वही सोच रहा हूँ, दिखता है। हाँ थोड़ा थोड़ा खुले में आ तेरा आइकन, शायद उस तरह नहीं आ रहा है। नहीं नहीं तेरा वो कर्सर खुले में ला। हाँ नहीं ये दूसरों का है, तेरा नीचे होगा। वही मैं सोचू क्या हो रहा है। हाँ ऊपर नहीं, डिपैड अप खाली। नहीं नहीं डिपैड अप खाली। हाँ अभी उस पे एक्स एक्स मत दबा, जाओ पीछे। हाँ बडी बॉट पे देख ट्रायंगल खाली। स्विच टू नहीं वो क्या, स्विच टू डिलीवर मोड ट्रायंगल। ट्रायंगल दबा। हाँ छोड़ दे, अभी उसको देख खाली दो। वो सेफेस्ट पॉइंट वॉइंट सब लेके जाता है पूरा। टेरिटरी म्यूल टेरिटरी से बच बच के जाता है। तो कहाँ से जा रहे हो? तो ब्रिज नहीं यूज कर सकता था वो घर। कर सकता था भाई, उसके कुछ उसूल होंगे खुद के। काफी फास्ट जा रहा है ना, फास्ट जा रहा है। हाँ उस बात तो लेके आई लव इट वाला, क्या क्रेजी है यार। जिपलाइन यूज कर सकता है क्या अपने डाले में, उसको कुछ फायदा? नहीं 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 वो जिपलाइन नहीं यूज करता। क्या फायदा बेचारे का। अपनी राह पे चलते जाता है। तो तू दूसरा सामान उठा के दे सकता है। मीनवाइल भाग रहा था किसे, भाग रहा था किसे। मेरे को देख के स्लो हो गया। नहीं वो चढ़ रहा है शायद ऊपर, पता नहीं, हो सकता। Cargo for delivery damaged by high temperature. बाइक नहीं हिल होती ना साला। अपना सामान नहीं होती है। भाग रहा था किसे, भाग रहा था भाग रहा, अंदर की भाग रहा है, अंदर की भाग रहा है। यहाँ की होगी एक डिलीवरी। और देखा कैसा डालता है वो। अरे माँ हाँ वो 4 डब्बे शायद, 4 डब्बे शायद। देखते कैसा डालता है। टाइम सेंसिटिव क्या है मेरे पास, सिंथेटिक क्रिप्टोबाइट सैंपल। देखा कैसा डाला। हाँ अंदर घुस के निकला। हाँ अभी तो डिलीवर कर दे प्राइवेट लॉगर से उठा के। नहीं एक्चुअली तो डायरेक्ट तो डिलीवर ऑर्डर पे आएगा ना तो आ जाता है। मेक डिलीवरी।
weapons restrictions. Take care. Thanks for coming. Came in handy. So far, so good. Feeling good. Looks like you have what was requested. All that remains now is to drop it off. मेन मिशन वाला कैसे पता चलेगा मेरे को कौन सा ऑर्डर है मेरा? स्टार जैसा आता ना। मेन उठाया भी था तो वही तो किसके पास से होगा? पॉज दबा। ऑर्डर नंबर 2 रिकवर क्या? एक ऑन न्यू ऑर्डर फ्रॉम। नहीं वो तो कुछ और है। हाँ वो स्टार वाला है ना। मेन मिशन वो स्टार का है क्या ना? तो माउंटेनियर से उठाया नहीं था, खाली डिलीवर करके निकल गया। बोला भी तेरे को तू निकलता है क्या? मैं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, मैं कर रहा हूँ मेरे बॉट में लगा दिया ना। अरे बॉट ले ले, बॉट का हाँ जैसे कि तू ले लिया था अभी, कर ले बॉट का, जैसे कि ले लिया तू। मैं वही देखता था ना मिशन पे। घंटा चुप कर रहा हूँ निकल गया तू। मतलब देख ले क्या दे रहा क्या नहीं। बॉट का कर ले पहले बॉट का कर ले। फ्लोटिंग कैरियर भी स्केट भी नहीं किया तू। स्केट करने की जगह ही नहीं है तो क्या करूँगा? वो माउंटेनियर पे ही जा रहा है ना तेरा छोकरा? लगा आ रहा है उसको बोल रहा है। देख ना उसको कैसे भाग रहा है इस एंगल में। फोटो वोटो लो। ये राइड पे भाग रहा था वो जो चमक रहा है। Weapons detected. Be advised that usage is restricted. Security grounds. Access the delivery terminal. कहाँ जा रहा है वो? अच्छा हाँ उधर से चढ़ के आएगा ना इनका। नहीं वो दूसरा वाला जा रहा है शायद, नया वाला बंद होने जा रहा है। नहीं सही के पास हाँ तू गया नहीं ना कभी रोबोट? Hey Sam, I've been waiting for you. खुला का Take on that order, huh? Okay, I'll check out the cargo then. मार के वापस नीचे आ गया। वाह बहुत तेरे पे चढ़ा देगा कार्गो वाला भाई, तू ही ले ले। Great job. मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ा फास्ट होना चाहिए। डिप्लाई इसका लेवल 2 सब पढ़ना पड़ेगा। You're always there कुछ just है when I क्या need उसमें you. डिफरेंस? Allow me to express my मैंने किया नहीं gratitude with this है। thing. इतना मालूम है लेवल 2 पे या लेवल 3 पे तो तू फ्लोटिंग कैरियर्स लेके जा सकता। तो सोच कितना क्रेजी वेट हो गया। वो तो ठीक है, स्पीड भी होनी चाहिए। अपना निकल जाए। Do you have enough materials?
Why don't I increase the amount you withdraw from here? Now displaying your current order grade. You are incredible. And with talents like those, you might even catch their eye. The Tarlake twins, that is. I went and shared another music sample with you, by the way. If you can, I would love it if you had a listen. Yeah, got it from a kindred spirit in the UCA. Stuff that'll hit you right in the Kandha. A classic tune. When you head back to your room, have a listen. For real, you'll be hooked. That's right, or so I've heard. They live on the edge of a tar lake to explore the limits of what a human being can handle. Only interested in meeting exceptional folks capable of pushing said limits. Sadly, nobody has come along that fits the bill. Makes for an interesting story, huh? Which has me wondering, what kind of person would be good enough? Again, thank you so much, Sam. It's weird though. How did something I know I'd stored safely end up in a place like that? Anyway, you might want to keep an eye on your own stuff. Take care. Please come back soon. 3 डिलीवरी आ गई भाई, 2 या 3 Order complete. यहाँ क्या तू ऑलमोस्ट Well done. That's so you. You're one in a million. आग डालेगा क्या करता हुआ रहेगा। Keep it up, Sam. वजन लेके जाने का तभी कुछ बाइक का गाड़ी नहीं लाया होगा। Order accepted. कहाँ लेके जाने का तेरे स्पिरिचुअलिस्ट? हाँ वो तो ये साइड पे, माउंटेन साइड पे और ऊपर। बाकी कुछ नहीं है क्या कि स्पिरिचुअलिस्ट को बाद में डिलीवर करे तो माउंटेन नोड पे कुछ देके आना है? सभी स्पिरिचुअलिस्ट का नहीं होगा मतलब सभी जो मेन हैवी जो तेरे को मेन भारी पड़ रहा है वो सब स्पिरिचुअलिस्ट का है। 80 किलो का हाथ गाड़ी में जा रहे कल पड़ी
मेरे भाई ओजिम की आवाज क्यों नहीं आ रही तेरे को? तेरे को आ रही है? नहीं नहीं खर 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 उसकी हो रही है ना? आई गेस अरे माँ ये क्या होराइजन जीरो डॉन इसमें भी आता है नहीं तो कैसे दिख रहा है इसमें ऐसी खाली वर्चुअल डाल दी है। पार्ट 2 में आज दिखता है वो चली ये पता था अच्छा हाँ हेलो हाँ क्या हो रहा है तेरी आवाज का? नहीं मैं क्या बोलते अपना बीएस से आया था ना तो आएगा अरे गाड़ी अरे कुछ टेरेन पे तो कुछ भी चलती है भाई गाड़ी अभी आ रही है ना बराबर मेरी आवाज? हाँ मच्छर तेरी अरे भाई ये क्या स्टॉर्म आ गया है क्या गाड़ी तेरी भाई साहब बेचारा रुकती क्या नहीं कहाँ जा रहा है? दिखाई भी तो नहीं दे रहा भाई ऐसा लग रहा फ्रिज के अंदर है ना? कसम से शर्ट में और दिमाग खराब कर दिया
क्या? बूस्ट मार दे ना और जंप मार के निकल जा। सामने क्या पत्थर? पत्थर पे फंस गया। हाँ वही तो। पाथ पे था मैं, चूतिया फिसल गया तो शॉर्ट ही हो गया। और क्या बात है भाई, कहीं से खत्म नहीं हुई। पूरा Wait, Sam, you've just dropped some of your cargo.
Nearly at our destination. You see anything suspicious? Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam. Aren't you a sight for sore eyes? Been a long time, Sam. Fuck, how you still alive? Oh, no, I'm just a ghost.
Come to take my revenge on you and that bitch Fragile. All the way from the other side. Of course, there's no point in trying to kill you when you won't stay dead. But there are plenty of other ways to make you suffer. Huh? The kid kicked the bucket, huh? Shame. Goddamn shame. Tonight, what, you just lugging that coffin or pod? Going on a walkabout? Well, that's touching. Even if you don't know a goddamn thing about Luke. What are you saying? Huh? Maybe I can't kill you, you won't die, but you can lose everything you love. And torture yourself for the rest of time, knowing that death will never come for you. So you go on your little walkabout. Go wherever you want, but I... Be damned if I let you link up. This continent, not because extinction's my creed, though, no. No, I want to build a world where fear and violence are king. And who do you think will come out on top, Sam? You? With your hippy-dippy network? Or me? With my more rough and tumble methods? I can't wait to find out. Just a good old-fashioned boss fight. Cruelty or collaboration? The eternal choice. Let's put him to the test. Sam, I'm afraid that weapon is ineffective against mechs. You'll need to rely on something else instead. Cliche, but that one's gotta hurt.
seems to have done some damage. Wait, Sam, you've just dropped some of your cargo. Some of your cargo. Sam. That last attack of yours seems to have left a mark. Are you injured, Sam?
That was amazing, Sam. Great work. Now let's get this place on the chiral network. Yeah, that feels good. Your name is Sam, isn't it? We owe you one. What in the hell was that thing anyway? It looked like a machine, but none I've ever seen before. Right. We need to assess the situation. I can tell you gave it your all. We appreciate the help. I hope we can continue to rely on you in the future. This moment's been a long time coming. Please use your Cupid to connect us. Now displaying your current order grade.
Great. No issues establishing a chiral network connection. By the way, we've sent some folks out to recover the wreckage of that giant mech that attacked us earlier. Only prudent we study it, you know? If we learn anything of value, we'll be sure to relay it to Drawbridge right away. Thanks again for coming to our rescue. Sam, this is the President. Due to your tireless efforts, West Fort Knot is now part of the chiral network. A great achievement. I salute you. However, this expansion has done little to address the anomalous activity observed across the continent. Elsewhere, disruptions in the tar currents are growing ever more prevalent. Only by connecting all of Australia can we hope to resolve this situation. And by doing so, we will create the optimal conditions for a new Plategate to manifest as well. We are one step closer to making the chiral verse a reality, and ensuring humanity overcomes extinction. The road ahead is still fraught with peril, but I have the utmost faith in your capabilities. For now, though, please take a well-deserved break aboard the DHV Magellan. Order completed. Well done. Oh boy, I really miss the taste of food.
Was it really Higgs? He's alive. He called himself a ghost, but He found a way back from the beach just so he could kill us. it was definitely his voice I heard. I didn't get a good look at his face, but yeah. He said he came back to get revenge on you and me. Screwing with our plans to link up Australia was just another way to do that. They were all in red. Just like the ones at your place. That could have been him too. You think that was Higgs? Did you see him hurt Lou? I'm not sure. Fragile, I need you to remember. I only caught a glimpse. But they were all wearing red. This is all my fault. I had him at my mercy on Amelie's beach. If I'd only finished him off, none of this would have happened. No. You can't blame yourself. You know, something's been bugging me. Something he said. You don't know a goddamn thing about Lou. It hit me after. He's absolutely right. I mean, the kid's whole life is a total mystery to me. So I gotta ask. Can you look into Lou's past? Find out what you can? Charlie, you, the ship's crew, you all have connections within the UCA, right? And at least one of you has to have access to the UCA archives that were recovered by the chiral network. All right, Sam. Let's see what we can find on Lou. Thank you, Sam. Really, Sam? There's such a thing as too tight. Oh. That must have been quite the nightmare. I can't feel my legs. Lou. Sam, this is Tarman. Feeling refreshed, I hope?
includes Mexico as well. If you're curious about how the folks in the places you visited are getting on, you can catch up on any recent developments by accessing the Corpus via your ring terminal. And to have the Magellan travel to a given facility, simply open the map with your ring terminal and chart a course to your destination. Please select a destination. If you refuse, there will be severe repercussions. But what makes you think you have a choice? Sam. It's Charlie. Another request is ready for you. You'll find it listed as a main order on the DHV Magellan's delivery terminal. No, can't do it now. Now's not the best time. Nah, I'd rather hold it. Now's not the best time. Nah, I'd rather hold it.
My name's Sam, too. So you know, Sam, Fragile is currently looking into Lou. Meanwhile, Tarman is conducting a separate investigation into the giant mech that attacked you earlier. For now, we would like you to focus on extending the network. That is a task only you can handle. As the network grows in size, we will have much more information at our disposal to further our efforts. That said, you won't be able to proceed until the situation at West Fort Knott has been resolved. It appears that they're in dire need of additional supplies, to the point that they don't even have enough to prepare cargo for your next destination. This next order is intended to alleviate the situation. You're to restore the mine north of F1 and its monorail station to working order and link up West Fort Knott. After which, you'll deliver a large quantity of excavated materials from the mine to the settlement by rail. As this is a somewhat complicated order, I'll brief you on the details as you review the map. Anyway, I'd appreciate it if you could make this main order your top priority. All right, Sam. You'll need to work through several steps to complete this order. To begin with, collect the cache of materials waiting for you on the DHB Magellan. Take these to the mine north of F1. The location has been marked for you on your map. And when you arrive there,
Submit the materials using the terminal on site. This will allow you to restore the facility to working order. Next, access the terminal again to commence mining operations. If all goes well, a large quantity of materials should be extracted. You'll then need to deliver those materials to West Fort Knott. Consider making use of the monorail located at the mine to make life easier. Upon your arrival at F1, use the delivery terminal to submit all the materials for processing and to finally complete the order. That's all there is to it. So begin plotting your route to the mine north of F1. On this occasion, you'll be delivering some heavy materials. You can use a tri-cruiser to transport them. Alternatively, floating carriers can now be fabricated. These carriers are ideal for taking heavy cargo across terrain ill-suited to vehicles. If that sounds good to you, try fabricating one and loading the materials onto it. And when you're not using the carrier for cargo, you can hop aboard and kick the ground and use it as a makeshift skateboard. Just remember that floating carriers require chiral crystals to function, so keep a supply on hand. There's another porter here. Since you brought this site onto the chiral network, perhaps they thought they could make use of the additional data to make a safe run. Want to go and say hello? This one's for you. Thank you, guys. Keep on keeping on. Hey, ya! I'm counting on you.
Thanks so much for stopping by. Give me a moment while I check the orders. Found some of our missing stuff, did you? I thought this was good. We've made some great strides in our research thanks to you. If it's all right, we'd like you to have this. Just wanted to let you know that we're increasing the amount of materials you can withdraw. Now displaying your current Porter grade. This data I'm sharing is for a battery unit that can be fitted onto your vehicles. It'll significantly increase the battery capacity, and you can equip multiple units too. If you're planning to head out on an extended trip, you do well to make use of them. Why don't you give them a whirl the next time you feel like customizing one of your rides? Might help to keep you out of strife on the road ahead. Order completed. Well done. Vehicle customization services now. Somebody lend me a hand! I need help too!
Well done, Sam. Very good, Sam.
All topped up. Cargo transported by the monorail has been placed in your private locker. The cargo can be delivered via the terminal. Did you actually manage to restore the monorail? Awesome! With it back up and running, you'll be able to transport materials from the mines. Right. Sorry. Let's take a look at these materials you brought. Would you look at all this? I think it's safe to say we'll have nothing to worry about for a while. It's like a dream come true, this showing up on our doorstep. We'd written it off, but you made our day. It feels as though we're always leaning on you for support. Please allow us to return the favor with this data. Just wanted to let you know that we're increasing the amount of materials you can withdraw. Now displaying your current porter grade. Oh, here's a little something extra as thanks. I got them just for you. Figured they'd suit your style. They sure weren't easy to come by. A real collector's item, I hear. We really appreciate your help. At the risk of stating the obvious, it's going to take an awful lot of resources to restore the other roads and monorails to working order. But at least with this monorail operational, you can bring us large shipments of materials with relatively minimal effort. That's going to go a long way towards getting other sections up and running again. We can fabricate pickup off-roaders now, by the way. I'm pretty fond of them myself. It's a large four-wheel drive vehicle, boasts significant cargo carrying capacity for the hardworking. The driver's seat is in an... This allows... You can custom... that... the schematics... which mean... Sure. But repeated... and with the constant... If you happen to come up... even a small contribution... Anyway... We're so grateful for the assistance, Sam. You've been a ray of sun... You managed to save the day, Sam. The people here now have more than enough supplies for their needs. They should be able to prepare cargo for the next delivery too. But first, I have some information to share with you. About Lou. Return to the DHV Magellan so we can talk. Order completed. Well done.